A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Dear students, today we will discuss about the English speaking skills, especially relevant to the teaching of speaking skill at secondary school level. We go to a language is a social phenomenon. And as the Aristotle says that human is a social animal. And in living within the society, he has the need of a language to express his feelings, his emotions, or required description to describe its introduction. So, in a language as a whole, there are four integrated skills. There are four integrated skills, and when we see these four integrated skills, the first one is the reading skills, writing skill, listening skill, and speaking skills. So, language is essentially a highly complex phenomena of nature. In order to have a thorough understanding, linguists have tried to look at its different aspects. Language is generally divided into a number of skills as reading skills, writing skill, listening, and speaking skill. So, reading and speaking skills are considered to be productive skills, whereas the reading skill and listening skills are receptive skills. That's because we receive them. And writing and speaking are productive. That's because we produce something. Like that, listening is a receptive skill. We listen, and that's an internal process. Speak is an outcome based skill. Speaking प्रोडक्टिव स्किल्स है. हम नहीं बोलेंगे, खामोश रहेंगे, या जैसे कॉर्डिलिया ने कहा था नथिंग, then the King Lear says that nothing comes out of nothing. तो ये जो स्पीकिंग स्किल है, ये कोई नथिंग फिनोमिना नहीं है, बल्कि इट्स अ प्रोडक्टिव फिनोमिना. You say something, you produce something, you express your feeling in this whole phenomena. So it's called the productive skill. In the same way, writing skill is also a productive skills, that you are producing something and that has some uh, outcome that you can see in front of you. कि आप इसे देख सकते हैं कि ये प्रोसेस हो रहा है, इसे फील कर सकते हैं, इसे समझ सकते हैं. पर लिसनिंग स्किल्स को आप समझ नहीं सकते, देख नहीं सकते कि अगले बंदे के जहन में कॉग्निटिव लर्निंग में क्या प्रोसेस चल रहा है, उसकी कॉग्निशन में क्या प्रोसेस है. So in learning a foreign language, both productive and receptive skills are important. Here we are mainly concerned with analyzing the features associated with speaking skills. The general principle of linguistic analysis is the primacy of speech over writing. And in these two skills that we are namely as called the productive skills, the writing skills and speech. In both of the skills, the speaking skills having the supremacy or the primacy. It is an observed fact that spoken component of any language enjoy chronological primacy over written one. So, as the writing of Wilkins informed us that the speaking skills or the speaking language or speech
has the primacy or supremacy over the written one. And the other are the receptive skills. And in receptive skills, we observed that listening and reading skills are the receptive skills. So, in other words, we can say that these are the passive skills, and the other two, as we mentioned, as the speaking and the writing skill, these are the active skills. Primacy of speech. So, linguistics has produced a revolution of relationship between written and spoken language, but give primacy to the speech. Some linguists go for so far as to say that speech is language and writing is simply the reflection of speech in a different medium. Most of the linguists agree that it is older and wider than writing. राइटिंग जो है ये बहुत बाद में इजाद हुई. सबसे पहले जब ह्यूमन बीइंग उनकी इंसेप्शन हुई इस दुनिया में, तो सबसे पहले उन्होंने बोलने से इंटरेक्शन स्टार्ट किया. बट आफ्टर दैट बहुत बाद में जो है ये राइटिंग स्टार्ट हुई. इंसान जो है रिटन लैंग्वेज की तरफ आया. So most of the linguists agree that the children always learn to speak first and then they learn to write. Speak पहले इन दो में से, written और speak में से. speak करना पहले सीखते हैं, पहले speech सीखते हैं और फिर written. बट अगर एज अ होल हम 4 इंटीग्रेटेड स्किल में से बात करें तो सबसे पहले कौन सी स्किल बच्चा सीखता है, तो वो है लिसनिंग स्किल्स. सबसे पहले लिसनिंग स्किल्स आती है. तो इसीलिए कहा जाता है कि जो बच्चे बहरे नहीं होते वो जल्दी बोलना सीख जाते हैं, और जो बच्चे बहरे होते हैं वो गूंगे होते हैं, वो बोलना नहीं जानते. क्यों? क्योंकि वो सुनना नहीं जानते. उन्होंने अपने कानों को सुधाया नहीं सुनने कि क्या लफ्ज बोला जा रहा है, किस इंटरेक्शन में, किस पर्सपेक्टिव. सो दे मेक यूज ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. So more important linguistic analysis is the fact that all systems of writing can be shown to be based upon the units of spoken language. तो ये जो spoken language है ये so as the typical arguments in favor of speech before writing are given, it reflects the way children learn their native language as easy as he can to drive or to ride a bicycle. एक छोटा बच्चा जो लैंग्वेज को सीखता है वो इतनी ही आसानी से सीख सकता है जितनी आसानी से वो साइकिल चलाना सीखता है. तो इसी तरह से वो सेट पैटर्न्स जो कि उसकी सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं स्पीच के हवाले से, तो वो उनको भी सीखता है. तो इसलिए जब हम एक क्लास में फॉरेन लैंग्वेज, जैसा कि हम हमारे यहाँ क्लासरूम में जब इंग्लिश को एज अ फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाया जाता है, तो there's a very much important aspect of teaching of pronunciation. How to pronounce the word in English. What the right pronunciation. अगर हम उसको गलत प्रोनाउंस कर देंगे तो उसका मीनिंग टोटली चेंज हो जाएगा. So हम कह सकते हैं कि a child learn their native language and writing is only an imperfect representation of speech and involves extra problems of orthography. तो राइटिंग जो है ये स्पीच के लिहाज से एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फिनोमिना, इम्परफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है लैंग्वेज की स्किल्स में. तो सो द ट्रांसफर इन लर्निंग फ्रॉम स्पोकन टू द रिटन फॉर्म इज ग्रेटर देन द रिवर्स. अगर हम स्पोकन से रिटन की तरफ जाएं तो ये जरा ज्यादा सहल होगा, आसान होगा,
और अगर हम इसके रिवर्स कर दें कि हम रिटर्न से स्पोकन की तरफ आए, तो इससे ज़रा ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी चीज़ों को समझने में, क्योंकि जब हम फिजिकली एक चीज़ को सामने देख रहे होंगे और उसके स्ट्रेस और इंटोनेशन सिंबल जो है उस पर देख रहे होंगे, तो तब हम अल्फाज की अदायगी ज़्यादा बेहतर अंदाज में, उनको ज़्यादा अच्छे अप्रोप्रिएट और कंडीसिव अंदाज में उसे बयान कर सकते। Speaking before writing is the natural order in the first language learning. हाँ, लैंग्वेज लर्निंग में तो जो स्पीकिंग है वो राइटिंग से पहले ये एक नेचुरल ऑर्डर है, लेकिन अगर हम करना चाहते हैं फॉरेन लैंग्वेज में या सेकंड लैंग्वेज में, तो फिर हम इसके वाइस वर्सा भी कर सकते हैं. So there has been many convincing demonstrations that the students transfer more easily from speech to writing than the other way around. So the basic question pertaining to the techniques of spoken language are that when one should start the teaching of spoken language and when should phonetics are introduced for advanced learning in communication. तो हमारी कम्युनिकेशन में हम फोनेटिक्स को कब मुतारिफ करवाएंगे, कब बयान करेंगे कि हमारे ये जो फोनेटिक्स जो है इसको भी हम इसका अमल दखल इसमें लाएं. तो सो ट्रेनिंग इन फोनेटिक्स. Also in this context, Vulcan studies guide us that without training in phonetics, one would have only the most incomplete ideas about the articulation of sounds in particular language. कि phonetics की ट्रेनिंग के बगैर हम किसी लैंग्वेज सीखने के प्रोसेस में कतन जो है वो इनकम्प्लीट रहेंगे, कि जब तक हम फोनेटिक्स की ट्रेनिंग नहीं लेते तो उस वक्त तक हम उस सर्टन लैंग्वेज को, उस टारगेट लैंग्वेज का जो है वो लैंग्वेज सीखने में नाकाम है. तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट टू मेक अ ट्रेनिंग इन द फोनेटिक्स ऑफ दैट सर्टन लैंग्वेज. If he doesn't have an access to information to articulatory phonetics of target language. Language is part of language speaks as it as a child walks, as simple. So we can say that language is a part of man's biological nature, that he should speak just as I already mentioned that as he walk or ride a bicycle. Ride a bicycle, that's a complex phenomenon. But simply we can say that as a child walks. जैसे बच्चा चलना सीखता है ऐसे ही जुबान को सीख जाता है. Listening के through. So every individual learns to speak before he learns to write. तो इसलिए हर शख्स जो है वो जुबान को सीखता है उसके बोलने से पहले. So indeed the one learners or the students who speak whether he is taught or not. तो लैंग्वेज बेसिक नेटिव लैंग्वेज एक ऐसी चीज है जिसे आप पढ़ाएं ना पढ़ाएं, वो बच्चा उस इन्वायरमेंट में, उस सोसाइटी में रहते हुए उसे सीख जाएगा. बट इट इज डिफिकल्ट टू लर्न और टू राइट विदाउट हेल्प. लेकिन सीख तो जाएगा जुबान बोलना, लेकिन उसे लिखना है तो वो सिखाए बगैर या बोले बगैर नहीं आएगी. ये एक डिफिकल्ट प्रोसेस होगा कि without help you can't write. Sound system of language seems to be permanently in a state of flux. So the structural development of language is much more influenced by speech than by writing. So going toward the
speaking skill, aspects of language. According to the teaching in applied linguistics, there are two phenomena associated with speaking which establish its supremacy over writing. The first phenomena is the use of paralinguistic features like voice, dynamics, and gestures. Paralinguistic features that you voice. Human being is called the vicegerent of God. All this title is due to the two facilities. The first one facility is the facility of speech, and second one is the rational. So voice is the first paralinguistic feature of a language that makes the primacy or the supremacy of speech over writing, and dynamic and gestures. And the other is a non verbal behavior of language that makes the primacy over the written one. So in English, speech has one great source due to writing, namely the use of stress and intonation to convey meaning. The second phenomena is called the feedback. In a speech situation, there is a constant interchange between participants, each playing the role of speaker in turn. Let's suppose here is the discussion exists between two persons. One time, one is a work as speaker or the sender, and the second one is performing as the receiver or the listeners or the receptor. तो ये इंटरचेंज होता रहता है. लेट्स सपोज अगर किसी बंदे को इस डिस्कशन के दौरान कोई समझ नहीं आई तो वो कह सकता है कि सॉरी आई डिडंट अंडरस्टैंड, आई गॉट द आइडिया, आई डिडंट गॉट द गेट द आइडिया. तो सो वो जो दूसरा स्पीकर होगा वो उसकी क्लैरिटी कर देगा, उसको क्लियर कर देगा, और इस तरह एक डिस्कशन में जो है वो बात जल्दी समझ आ जाएगी. बट इन अ रिटन कॉन्टेक्स्ट, once a writer has write something to at second time he haven't any other opportunity to explain his or her idea. जब एक मरतबा एक राइटर ने लिख दिया है उसके बाद उसके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं रहेगी उस अपने आइडिया को एक्सप्लेन करने की कि नहीं भाई मेरा मतलब ये नहीं ये था, ये नहीं ये था. जबकि एक डिस्कशन में, एक वर्कशॉप में, एक ट्रेनिंग में आपके पास बहुत सारे मौके हैं कि आप अपनी बात को एलैबोरेट कर सकें कि नहीं भाई मेरा ये मतलब नहीं, ये मतलब था, फलां बात मैंने इस तनाजुर में कही थी तो वो इसलिए इसका ये मीनिंग होगा. तो इस तरह से आप अपनी बात को जस्टिफाई कर सकेंगे. In a speech situation, there is a constant interchange between the participant and each playing the role of speaker in turn. In the field of foreign language teaching, there has been a tendency to advocate the primacy of speech over writing as journal educational goal. So the next one point is to pronunciation is a deliberate form. The acquisition of an acceptable pronunciation is deliberate form in a foreign language or within a native language. आपकी टारगेट लैंग्वेज हो या आपकी मदर टंग हो, उसमें ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये एक डेलिब्रेट फेनोमेनन. व्हेन यू आर इंटरैक्टिंग और सोशलाइजिंग within the society or within the community for the learning of the pronunciation, तो वो आप एक कॉन्शियस फिनोमिना है कि आप उसको ऑब्जर्व करते करते, लिसन करते करते, जैसे हमने पहले एक बात की लिसनिंग स्किल्स में जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे हमने कहा था कि फर्स्ट टू टीच योर ईयर्स. जब आप अपनी ईयर्स को सिखा लेते हैं, सिखा लेते हैं, तो फिर आप उनके प्रोनाउंसिएशन को एक्यूरेटली भी कॉपी कर सकते हैं थ्रू the use of repeated practices. It is important for a learner to acquire an accurate pronunciation since the inability to make a phonetic distinction most likely leads to
misinterpretation of utterances. So, in the field of English as a second language, is it important for the teacher to be aware of how the language really is spoken? He had the need to understand the rise and fall of the pitch of the sound of the speech. If students are unacquainted with the weak forms and fail to practice them in inappropriate context, they will be unable to understand English as it is a normal spoken. But an understanding of intonation of the target language is essential for the acquisition of accurate pronunciation. So the rise and fall of pitch of voices reflect different shades of senses of meaning. Sometimes आपकी rise and fall जो है वो उसके pragmatic aspects जो हैं pragmatic meaning जो है वो आप पे जाहिर करते हैं और आप लैंग्वेज के जो प्रैग्मेटिक मीनिंग है स्पीच के जो प्रैग्मेटिक मीनिंग है उन तक रसाई हासिल करते हैं सो individual speech units are called syllables and emphasis laid on syllable is called stress. The emphasis laid on syllable is called stress. Like that elephant elephant एलिफेंट में दो सेलेबल तो हर सेलेबल पे जो हम स्ट्रेस देंगे वो स्ट्रेस कहलाएगा सो व्हेन द स्ट्रेस इज ऑन द फर्स्ट सेलेबल ऑफ कंडक्ट इज इट इज नाउन और जब ये पहले पे स्ट्रेस होगा तो फिर ये नाउन पे कहलाएगा और जब दूसरे हिस्से पे स्ट्रेस आएगा तो फिर ये सेलेबल जो है ये वो कहलाएगा Okay, thanks a lot for watching this. Please subscribe the channel and also share it.